Welcome back to Fashionbebe. Hey guys, this is Priyanka. I create lifestyle content. Hey fellows, this is Priyanka JK and you are watching me on my YouTube channel Passion Page. And today's topic is makeup transformation and tips and tricks before doing makeup and your face look as a fresh look with you. So I hope you are excited for my today's video. So let's get started. फेस को फ्रेश रखने के लिए और ग्लोइंग फील कराने के लिए ट्रिक्स बताऊंगी जो है आपके घर में अवेलेबल होता है टू योर लिप्स। तो मैं ये वाला वैक्सीन अप्लाई कर दे रही हूँ। वाला मॉइस्चराइजर यूज कर रही हूँ अपने फेस पे। I can use aloe vera, एक एक्स्ट्रा टिप है, करना तो करो। After aloe vera, simple है। We have a plucker। Obviously मेरे को टाइम ही नहीं है और मेरी आईब्रोज करनी बाकी रह गई है, तो मैं एक्स्ट्रा हेयर निकाल लूँगी इसके हेल्प से। I got one hair. Okay, that's it. I plucked my hair successfully now. एक एक्स्ट्रा टिप है बिफोर मेकअप बनाने पहले आपको DIY मास्क ट्राई करना है घर पे, तो यू कैन घर पे ही बना लो और अप्लाई कर लो अपने फेस पे। नेचुरल रेमेडी से करना, वो मैं आपको फिर कभी करके बताऊंगी। अभी नेक्स्ट हम मेकअप ट्रांसफॉर्मेशन कर लेते हैं। मैंने सुना था इससे करने से आपके पोर्स ओपन हो जाएंगे और आपका मेकअप जो है वो काला नहीं दिखेगा, आपका फेस रहेगा। First, I will apply this color. This is brown. And take a look at the top of my eye and blend it properly. And now I will use this color. This is little reddish, but it is pink. It looks like it. Make sure if you are using two colors, mix it and blend it properly. Lakme pink lipstick, shade pink. Now I will give it my eyeliner. After applying this kajal, I am smudging it on eyeshadow applicator. Leave? No,
have to complete it with applying this mascara. अभी मुझे एक पार्टी लुक बनाना होगा तो मैं उसके ऊपर चमकी स्टिक लगाती हूँ इस ब्रश से, और ये बहुत ही सिंपल है, हमें बस इसे लेना है, स्टिक करना है। और ये ओवरऑल ब्लू शिमर अच्छा लग रहा है। सो बस मेरा आई मेकअप कंप्लीट हो चुका है। अगर आप ठीक से देखोगे तो मैंने सेम टॉप को 2 अलग अलग टाइप से स्टाइल करने की ट्राई की है। सो आई होप यू लाइक इट एंड मुझे भी बहुत मज़ा आया ये वीडियो बनाते हुए। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मैं आपको ऐसे ही स्टाइलिंग वीडियोस बना के एंटरटेन करूँगी। तो पहले मैंने स्कर्ट के साथ इसे स्टाइल किया था और अब मैंने इसे जीन्स के साथ किया है और मैंने इसके अंदर एक ब्लैक स्पैगेटी पहना है और मैंने अपने नेक को हाईलाइट करने के लिए एक एक्सेसरी यूज़ की है और मुझे लग रहा है ये काफ़ी कूल लुक है। और अगर आपको याद आएगा सोनाक्षी सिन्हा का गो गो गोविंदा वाला लुक, तो ये सेम वैसा ही है।